Vipa and welcome back to my YouTube channel. So today we are going to do class 9th science chapter number 9 force and laws of motion. In that we are going to cover a particular topic that is first law of Newton, and we can also call it Newton's first law. So सबसे पहले न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या कहता है? न्यूटन का फर्स्ट लॉ ये कहता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पोजीशन में है तो वो रेस्ट पोजीशन में ही रहना पसंद करेगा जब तक कि कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना हो, और अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो वो मोशन में ही रहना पसंद करेगा जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ना हो. So this is all about Newton's first law sayings. So now we can define it. If the object is in rest position, it will tend to be in rest position until and unless the external force is applied. And if the object is in motion, then it will be in motion until and unless the external force is applied. अब हमारे पास जो फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन है उसका सेकेंड नेम भी है, दैट इज इनर्शिया. व्हाट इज इनर्शिया? इनर्शिया वो प्रॉपर्टी है जो कि बॉडी को उसकी स्टेट चेंज करने से रेसिस्ट करती है. या सो नाउ वी कैन आल्सो डिफाइन इनर्शिया दैट अ प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी दैट रेसिस्ट द ऑब्जेक्ट टू चेंज इट्स स्टेट. दिस इज इनर्शिया. Now inertia is broadly divided into three types. First is inertia of rest, second is inertia of motion, third is inertia of direction. Now we will learn them step by step. So first moving to inertia of rest. Inertia of rest क्या है? अगर कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट पोजीशन में तो वो रेस्ट पोजीशन में ही रहेगा, अपनी स्टेट चेंज करने से वो रेसिस्ट करेगा जब तक कि कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ना हो. So this we call inertia of rest. Okay, now we can define it that if the object is in rest position, it will tend to be in rest position and resist it to change its state if until and unless the external force is applied. So this is inertia of rest. Now we can see example 2. उसका एग्जाम्पल है कि अगर आप कार में बैठे हो and car is in rest position, you are also in rest position. तो आपका लोअर पार्ट होगा वो तो कार के कांटेक्ट में होगा, but the upper part is in not car's contact, right? So अब suddenly कार स्टार्ट हुई. जैसे ही कार स्टार्ट हुई we go to the back. But why it happens? Because अगर कार सडनली स्टार्ट हुई तो वो मोशन में हुई, और जो हमारे लेग्स थे वो ऑलरेडी उनके कांटेक्ट में थे तो वो भी मोशन में हुए, बट हमारा जो अपर पार्ट है वो तो अभी रेस्ट पोजीशन में ही है. सो सब मोशन में हो गया और हमारा जो अपर पार्ट है वो रेस्ट पोजीशन में हो गया. दैट्स व्हाई वी गो बैक व्हेन सडनली अ कार स्टार्ट्स. सो दिस इज एग्जांपल ऑफ इनर्शिया ऑफ रेस्ट. नाउ मूविंग ऑन टू द सेकंड प्रॉपर्टी और सेकंड टाइप्स. Yeah, it is inertia of motion. अगर कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में है तो वो मोशन में ही रहना पसंद करेगा, वो अपनी स्टेट को चेंज होने से रेसिस्ट करेगा. इसे हम कहते हैं inertia of motion. So we can define it, yes, that if any object is in motion, it will tend to be in motion and it will resist to change its state, and this is known as inertia of motion. तो हमारे पास इसका एग्जाम्पल भी है inertia of motion का, is that if the car is moving, your lower part is in contact with the car और आपका upper part है वो contact में नहीं है कार के. अब जैसे ही कार सडनली ब्रेक मारी कार ने, आप सडनली आगे आए, बट why it happens? Because कार मोशन में थी, अब सडनली ब्रेक मार के वो रेस्ट में हो गई. अब हमारे जो पैर है वो ऑलरेडी कांटेक्ट में थे तो वो भी रेस्ट पोजीशन में आ गए, बट अवर बॉडी, अपर पार्ट ऑफ द बॉडी इज इन मोशन एंड इट डज नॉट टेंड इन रेस्ट. सो वो आगे की तरफ मूव हो गया बिकॉज it is not in rest, it is in motion. That's why it tends to be move front. Okay, so this is inertia of motion.
Now moving on to the inertia of direction. The last type is inertia of direction. अगर कोई भी ऑब्जेक्ट एक ही पोजीशन में मूव कर रहा है तो वो उसी पोजीशन में मूव करना चाहेगा जब तक कि कोई एक्सटर्नल फोर्स ना अप्लाइड हो, वो तब तक रेसिस्ट करेगा. The object will move in one direction and always prefer to move in one direction, and it will resist to change its direction until and unless the external force is applied. This is the definition of it. Now let's take an example. So example ये है कि you are moving in this direction, this, and suddenly the car turns in this direction. But आप उसके opposite direction में move हो जाओगे like this. Yes. But ऐसा क्यों? Why? Because आपकी lower part of the body is in contact with car. So अब कार ने जैसे ही turn लिया, the lower part also turn because it is in contact. But the upper part is not contact. Upper part भी वही direction में जा रहा है. That's why when suddenly a turn came, our body goes into the opposite direction. So this is all about the inertia of direction. Hope you will understand inertia and its type. So thank you for listening me, and thank you.